Okay, so again, welcome to Dr. Haider Maths classes. So now we are going to start the next topic, that is linear programming. Linear programming. Okay, linear programming. So here in the linear programming, only we have to, there is only one exercise. So in this exercise, हमें क्या करना है कि पहले कुछ कंसेप्ट समझ लें। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और एक क्वेश्चन इसके बेस पे आपको बोर्ड में पूछा जाना ही जाना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फिजिबल रीजन की बात होगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिबल रीजन एंड कंस्ट्रेंट्स क्या होगा, और मिनिमाइज और मैक्सिमाइज की वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्राफ, क्योंकि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है भाई। सो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, एज वी रेड इन द 11th क्लास, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या ओनली लेस देन या ओनली ग्रेटर देन। दिस इज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ओके। और जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यू सी सिंपल, पहले हम लोग सिंपल से करते हैं कि सपोज वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x is equals to 2, x is equals to 2. So this is the x, so y is the Cartesian plane, this is 1, this is 2, this is the graph of x is equals to 2. Okay. लेकिन अगर इस क्वेश्चन में कह दिया जाए कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x is less than equal to 2, तो this is x is equal to 2 and we have to draw the x is less than 2. जब less than और equal to 2 का सिंबल रहेगा तो हम लोग लाइन को टच करते हुए टूवर्ड्स द ओरिजिन इसकी शेडिंग कर देंगे, टूवर्ड्स द ओरिजिन। दिस इज द रीजन ऑफ x is less than equal to 2. If your question is draw the x is greater than equal to 2, so again x o y, and this is the line of x is equals to 2, but we have to draw x is greater than or equal to 2, तो लाइन को टच करते हुए अवे फ्रॉम द ओरिजिन चले जाएंगे। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ x is greater than 2. So this example I have taken for one variable. If there is a case of two variables, so in the same way we will draw a line. Suppose the question is, and now I am taking an example, x plus y is less than equal to 2, and now see x is less than equal to 2. X is less than equal to x plus y is less than equal to 2. Okay, so x plus y is equals to 2. So suppose this is x o y. When x is 0, then value of y is 2. When just we will find the two coordinates, that is sufficient, more than sufficient. Okay, this is rewrite x is equal, x plus y is equals to 2 when x is equals to 0. If x is equals to 0, then y will be 2, or if y is equals to 0, then the value of x is equals to 2.
Okay. So now plot the graph. This is 1, this is 2, this is 1, this is 2. So this is 0 and 2. This point is of 0, 2. This is 0, 2 point. And when y is 0, x is 2, this point is of 2, 0 point. And with the help of a scale, draw a straight line. Okay. And now the inequality sign is less than equal to, तो हम लोग लाइन को टच करते हुए टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड कर देंगे. इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहे, राइट. सो दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2. अगर ये x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता तो लाइन को टच करते हुए अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर की तरफ चले जाएंगे, राइट. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिबल रीजन. फिजिबल रीजन मीन्स कि अगर आपके पास इनइक्वालिटी की दो या दो से ज्यादा इक्वेशन गिवन है तो एक जो रीजन ऑब्टेन्ड मिलेगा, जो कॉमन रीजन मिलेगा, दैट रीजन इज कॉल्ड फिजिबल रीजन. और जो फिजिबल रीजन होगा वो दो तरह का आपको बनेगा. एक तो होगा बॉन्डेड रीजन, ठीक है भाई, बॉन्डेड यानी क्लोज्ड रीजन. और दूसरा मिलेगा हमें अनबॉन्डेड रीजन यानी कि ओपन, कोई देयर इज नो कॉमन पॉइंट. और फिजिबल रीजन निकालने के बाद जब हमें फिजिबल रीजन मिल जाएगा तो उसके कॉर्नर पॉइंट यानी कि वर्टिसेस को लिखा जाएगा. और वर्टिसेस को नोट करने के बाद जो भी आपका z दिया हुआ है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, जो भी z की इक्वेशन दी हुई है उसमें उस जाकर के कॉर्नर पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा. और उसके बाद देखा जाएगा कि कौन सी वैल्यू किस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रही है या किस पॉइंट पे मिनिमम आ रही है. बस इतना सा काम इसमें करना है. ओके, राइट. सो मैं दो क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा आपके बाउंडेड रीजन के लिए और एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा अनबाउंडेड रीजन के लिए. एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको खुद ही कर लेना है क्योंकि इससे आसान कोई एक्सरसाइज नहीं है. ओके, ओके. सो नाउ स्विच ओवर टू द exercise, okay, by giving these points. Okay, so I am taking the question number 3. Third question I am taking of your exercise. There is only one exercise. So here the maximize is z. Z is equals to 5x plus 3y. 5x plus 3y and subject to constraints are 3x. Constraints are given 3x. Constraints we can write. Constraints are 3x plus 5y is less than equal to 15. This is the first inequality equation. Or 5x plus 2y is less than equal to 10. And x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0, right?
So we will simplify it. Okay, we will simplify it. So put it number 1 and put it number 2. Okay, so from first, 3x plus 5y is equals to 15 if x is equals to 0 and y is equals to 3, and if y is equals to 0 then x is equals to 3 5s of 15. Find the 2 points, that is enough. Now draw the graph this side. Okay, so this is 1 2 3 1 2 3 4 and 4. 1 2 3 4, this is on x-axis and this is on y-axis. 1 2 3 and 4. So when x is 0, y is 3, so this point represents 0 3, and when x y is 5, this is 5, so 5 and 0, this is the 5 0 point, and with the help of a scale join these lines. Okay, and now shade it. Okay, now shade it. Now shade it with this color. Okay, because this is less than equal to. Okay, less than equal to, so towards origin. Now the next exercise, from second, so 5x plus 2y is equals to 10. If x is equals to 0, then the value of y will be 5, and if y is equals to 0, then the value of x is equals to 2. So now this point is, say, 5. So when x is 0, y is 5, this point is 0 5, and when y is 0, x is 2, this point is 2 0. Okay, and with the help of this scale join this line. Okay, so this line represents 3x plus 5y is less than equal to 15, and this line of 5x plus 2y is less than equal to 10. Okay, and now again this is the less than equal to, तो लाइन की शेडिंग कहाँ होगी, लाइन के नीचे, below the line towards the origin. Okay, so now I am using this color. Okay, so for this is the representation of this line. So what we have seen, this is the common region. This region is coming common, right? This region is coming common, है ना? Overlapping साफ साफ दिख रहा है आपको, तो ये region हमारे पास common region आ गया. So therefore the obtained feasible region is bounded. So obtained feasible region is bounded, right? सो बाउंडेड रीजन मिल गया, यानी कि ये रीजन हमारा बाउंडेड है. तो एक वर्टेक्स तो ये ए हो गया, ये तो आपका ओरिजिन ही है, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ये हमारा सी पॉइंट हो गया. तो 3 वर्टेक्स, 3 पॉइंट हमें मिल गए. तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए हो गया आपका 0 3, और बी हो गया आपका 2 और 0, और सी पॉइंट हो जाएगा जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे. तो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो सी की वैल्यू आपके पास आनी चाहिए, सी की वैल्यू आपके पास आनी चाहिए. और एक पॉइंट आपका ये है, तो ये तो 0 0 है, ये वैल्यू 20 से इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 2 और 5 मान के चल लेते हैं. अगर ये 2 पे आ रहा है और ये 5 पे आ रहा है, ये तो मैंने रफ ड्रॉ किया है, या हो सकता है कि 2 और
2.5 है, जैसे मान लेते हैं जो भी है, अगर ये पॉइंट हमने एग्जैक्ट ले लेते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है भाई, तो 1.5 और 2.5 कुछ ले लेते हैं इस पे। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं, अगर मान लेते हैं कि ये 1.5 है और ये 2.5 है, ठीक है। नाउ अब इसका एक हम लोग टेबल बना देंगे कि द वर्टिसेस ऑफ ए बी सी, या कॉर्नर पॉइंट्स and value of z, and z is given 5x plus 3y. So the corner point is given first a vertex, that is 0 3. So what will be the value of z when x is 0 and y is 3? So 3 3 is 9, 0 plus 9 9, and b vertex 2 comma 0. So the value of z is equals to 2 5 is 10 and 0. And when the value of c, what will be the c? Say 1.5 or 2.5. Okay, so 1.5 means what will be the value of y? 1.5, 5x, this is 15, 5 is a 7.5, and the value of y is 2.5, so again it is 7.5, so this is equals to 15. Okay, this is 15, and the question says find the maximum value. So what is the maximum value? So the maximum value is 15. So here we will write, so maximum value is 15. Maximum value of z is 15 at which point? At this point. Okay, at the point 1.5 and 2.5, and this is the required solution. Got it? Very simple. ठीक है, हमें क्या करना है कि इनइक्वालिटी बना दीजिए, एक ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उसका कॉमन रीजन देख लीजिए, कॉमन रीजन देखने के बाद उसमें ये हम चेक कर लें कि रीजन हमारा जो है बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। इसके बाद अगर बाउंडेड रीजन मिल गया तो सारे वर्टिसेस को लिख दीजिए, ये एक वर्टेक्स हो गया, ये दूसरा वर्टेक्स हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया, 4 वर्टेक्स हो गए। एक वर्टेक्स तो ओरिजिन मैंने लिखा नहीं है। अब एक टेबल बना लेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स और द वैल्यू ऑफ जेड, और कॉर्नर पॉइंट को जेड पे रख देंगे एक्स और वाई की जगह पे, और अगर क्वेश्चन मैक्सिमाइज कर रहा है तो उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उस पॉइंट पे आपका आंसर मैक्सिमम हो गया। अगर मिनिमाइज कर रहा है तो मिनिमम वैल्यू लिया जाएगा। दोनों कहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू ये आ गई और मिनिमम वैल्यू 9 आ गई, तो 0 और 3 पे मिनिमम है और 1.5 2.5 पे मैक्सिमम है। राइट, गॉट इट? ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन आई विल सिंप्लीफाई। यहाँ मैंने 2 इनइक्वालिटी का लिया है, अब एक मैं 3 इनइक्वालिटी का केस ले रहा हूं, राइट, जिसमें 3 इनइक्वालिटी हो।
Okay, the next question. एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, और एक क्वेश्चन और लूंगा अनबाउंडेड का कि हेयर मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ जेड, मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल्स टू 3x plus 2y, 3x plus 2y, and the subject to as x plus 2y is less than equal to 10, and second one is 3x plus y, 3x plus y is less than equal to 15, and xy greater than equal to 0. Okay. बेटर आई विल टेक द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दो इनइक्वालिटी हो, तीन इनइक्वालिटी हो, क्योंकि दो तो ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, तो मैं तीन इनइक्वालिटी का लेना चाह रहा हूं। सो तीन इनइक्वालिटी का केस आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ क्वेश्चन, डिटरमिन द मैक्सिमाइज 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 z is equals to x plus 2y, and subject to condition is given x plus 2y is greater than equal to 100, and 2x minus y is less than equal to 0, and 2x plus y is less than equal to 200, okay, and xy is greater than equal to 0, x is greater than 0 and y is greater than 0, okay. Okay, so first of all, what we will do, put it inequality number 1, inequality number 2, or inequality number 3. So from first, x plus 2y is equals to 100. So if x is equals to 0, then y is equals to 50. And if y is equals to 0, then x is equals to 100. This is the first case. Now from second, 2x minus y is less than is equals to 0. Okay, is equals to 0. So if x is equals to 0, then y will be 0, and if y will be 2x is equals to y, so one point is 0, 0 is coming, so line will pass through the origin. So 2x is equals to y. Then if y is equals to say 50, then what about the x? X will be 100. Okay. If x is equals to y is equals to 50, because y is equals to, if x is equals to 2. Okay. So take this one. 2 points are sufficient. If x is equals to 50, then y is equals to 100. Okay. And here 2x is equals to y. Say if x is equals to, or x is equals to 10, then 50 or 100. Okay, x 0, 0 and 100, that's sufficient. And then from third,
from third, 2x plus y is equals to 100. So if x is 100, if x is 0, then y is 100, or if y is 0, then x is equals to 50, right? Now draw the graph. Draw the graph. Okay. Draw the graph. This is x-axis. This is y-axis. This point is origin. And now the value is 0, 100, 50. So take at the interval of 10 or at the interval of 20. Then say it is 20, then 40, because maximum value is coming. Okay. Or we can take 25, 25 as you like. Scaling is up to us. Okay. Either we can take, or if we will take 10, 10, 10, then it will be more. Okay. So this is 10, this is 20, then 30, then 40, then 50, then 60, then 70, then 80, then 90, and then 100. And similarly, if this is 10, this 20, then 30, then 40, then 50, then 60, then 70, 80, 90, and 100. Okay. So scale 1 square is equals to 10 units मैंने लिया है. Now पहली इक्वेशन की लाइन है x0 y50. So this point is of 0 and 50, and y0 x100. This point is 100 and 0. So with the help of a scale, this line and this line we will join. Okay. And now the inequality is given: x plus 2y is greater than 100. So x plus 2y is greater than 100. So this I am taking x plus 2y. X plus 2y is greater than equal to 100. So we will shed. This is our region. Okay. This is the region of x plus 2y is greater than 100. Okay. This region. Okay. Now the next line is if x is 0, y is 0, this point is 0, 0, this is 0, 0, and if x is 50, y is 100, y is 100, and x is 50 and y is 100, 50 and 100. So this point is suppose 50 and 100. Okay. So with the help of a scale, we will join this. And now the sign is of inequality. So the inequality sign means the sign is of inequality. So we will towards the origin. So this is the area of, है ना, इसको मैंने ग्रीन कलर से शेड कर दिया. ओके. सो आपका रीजन देखिए अभी तक कॉमन क्या आता है. एक लाइन हमारे पास और है. व्हेन x इज 0 and x is 0 and y is 100, 0, 100, ये पोजीशन आ गई आपकी. x is 0, y is 100, और y is 0, x is 50, ये पॉइंट हो गया आपका 50, 0, and this line is like this. Okay. And this inequality is less than equal to 200. So that will come towards the origin, है ना भाई. तो अब हमें जो कॉमन रीजन मिला, व्हाट इज द कॉमन रीजन? सो दिस इज द कॉमन रीजन. सो द कॉमन रीजन इज दिस इज द कॉमन रीजन, है ना. दिस इज द कॉमन एरिया. दिस इज द कॉमन एरिया. This is not the common area, sorry. This is the common area. This is the common area.
This area is common. This area is the common. क्योंकि ये आपकी रेड वाली एरिया में नहीं आ रहा था, ये आपका रेड वाला एरिया में आ रहा है। तो एक पॉइंट ये हो गया आपके पास, एक पॉइंट ये हो गया आपके पास, और एक पॉइंट आपके पास ये हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 पॉइंट निकाल दिया और एक पॉइंट ये हो गया। ये 4 पॉइंट निकल के आ गया। तो दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी। ठीक है। अब कॉर्नर पॉइंट निकाल दीजिए कि वर्टिसेस आर ए इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? कौन सा रीजन कॉमन निकल के आया? ये रीजन कॉमन निकल के आया। 0 से 200 था, मैंने क्या ले लिया था? 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 200 है। सॉरी, मेरी गलती है यहाँ पे। तो दिस इज 200 है। सो इफ x इज 0 देन y इज इक्वल्स टू 200 हो जाएगा, और इफ y इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। ये ग्राफ गलत हो गया था। ओह, तो पॉइंट और आगे बढ़ाना पड़ेगा। सो लेट मी इरेज दिस वन एंड आई हैव टू redraw again because बकवास सिस्टम दे। Okay, so draw the graph of one more time. X plus 2y is equals to 100, then x is 0, then y is equals to 50, and y is 0, then x is equals to 100. Okay. From the second inequality, 2x minus y is less than 0, then x is 0, y is 0, and x is equals to 50, then y is equals to 100. Okay. And 2x plus y is less than equal to 200 is equals to 200 when x is 0, y is 200, and when y is 0, then x is equals to 100. Okay. So now draw the graph. Suppose, so this point is x-axis and this point is, say, y-axis, and now I am taking at the interval of 20, 40, 60, t, then 100, or better take 50, 50. It will be more easy, otherwise it will be too lengthy.
क्या दे दिया है बोर्ड यार हमको। So say it is of 50, then 100, then 150, and then 200. So this is 50, 100, 150, and 200. Okay. So in the first case, if x is 0, y is 50, 0, 50, x is 0, y is 50. So this point is of 0, 50. And when y is 0, x is 100, so this point is 100 and 0. Okay, 100 and 0. And now draw the graph in this situation. And the first one is x is 0, y is 50, and y is 0, x is 100. And this is the साइन ऑफ ग्रेटर देन इनइक्वालिटी। जब ग्रेटर देन का साइन है तो हम लाइन से ऊपर का एरिया इसको शेड कर दें। ठीक है भाई, तो दिस इज द शेडिंग पार्ट ऑफ दिस ग्रेटर देन इनइक्वालिटी का साइन, राइट? दिस इज द एरिया। नाउ सेकंड इनइक्वालिटी इज इफ x is 0, y is 0. So when x is 0 and y is 0 and 0, 0, this point is of course 0, 0, and 50 and 100. So this is 50 and this point is 100. So this is 50 and 100. So the line is passing through like this and it is inequality का साइन हो गया। तो हमारे पास जो शेडिंग हो गई वो ये रीजन आपका आ गया। ठीक है भाई, ये रीजन आ गया, दिस इज द रीजन। एंड थर्ड इनइक्वालिटी है हमारे पास कि व्हेन x is 0, y is 200. So x is 0 and y is 200. So this point is of 0 and 200. And when y is 0, x is 100. So this point is of 0 and 100. Okay. So the line is coming here and the inequality sign is less than. तो ये जो शेडिंग हो गया, तो दिस इज द शेडिंग। ओके, ये आ गई हमारे पास। सो व्हाट इज द कॉमन एरिया? सो द कॉमन एरिया वी आर गेटिंग, दिस इज द कॉमन एरिया, राइट? दिस इज द कॉमन एरिया, दिस इज द फिजिबल रीजन। ओके, दिस रीजन इज द फिजिबल रीजन। So we have got the region. So the vertex, this vertex is A, this vertex is B, this vertex is C. Suppose this is A point, this is B, this is C, and this is D. So A point, the corner of A is 0 and 200. Okay, and the vert B is 0 and 50, and then C is left and D is left. Okay, so what will be the value of C and what will be the value of D? So this C will be, it should be 50, 50, 50, 50 and 100. So 50 and 100. Okay, and what about the D? So D should be equal to this should be 20, 40. This should be 20, 40. So this is 20 and 40. And what about the D? The D should be 50 and 100. 50 and 100. Okay. Now we will find a table because we have to find the maximum value. So the corner point is this and Z is equals to, what is the Z? X plus 2y. So this is the value of Z. So the corner point is at point A. A means 0 to 0 and 200. So the value of Z will be at this point, the value of Z. So the value of Z, this is x plus 2y. So Z is equals to 0 plus 200 into 2, 400. Okay, at point B, 0 and 50. So value of Z, x is 0, y is 50 to the 100. Okay,
and at point C 20 and 40. The C point is 20, 40. So the value of Z is equals to 20 plus 40 to the 80, that is equals to 100. Okay, and at point D 50 to 100. So the value of Z is equals to X plus 2Y. So 50 plus 200, that is equals to 250. So what is the maximum value? So this is the maximum value. So the maximum value of Z is 400 at which point? 0 to 200, and this is our answer. Okay, got it? Okay, and now one more question I would like to discuss. If the feasible region is unbounded, तो अनबाउंडेड रीजन अगर आ जाए तो उसमें भी हम लोग कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे, मैं अभी क्वेश्चन लेके एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसमें हम लोग वैल्यू ऑफ जेड की लाइन को देखेंगे कि जेड की लाइन, अगर जेड की लाइन किसी भी कॉमन पॉइंट से पास हो रही है, सो देयर विल बी नो मिनिमम और नो मैक्सिमम वैल्यू। अदरवाइज जेड की लाइन, जेड का ग्राफ किसी भी कॉमन पॉइंट से पास नहीं होता है, तो जो भी टेबल के अंदर मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू आई है, दैट वी विल कंसीडर। ओके, सो नाउ one last question I would like to take on the basis of open region, unbounded region. Okay, so one question, which question will be of your linear programming? This question number 9, that is based on unbounded region. So here the value of z, the value of z is equals to minus x plus 2y, minus x plus 2y, and subject to constraints are given. X is greater than 3, x is greater than equal to 3, and x plus y is greater than equal to 5, and x plus 2y is greater than equal to 6, and y is greater than 0. These are the constraints. Okay, these are the constraints. So draw the, this is, put the first
this is second, this is third, and this is fourth. So draw the graph from first. X is equals to 3. So draw the graph of x is equals to 3. Right? This is x-axis and this is y-axis. Okay? Say it is 1, 2, 3 and 1, 2, 3, and the line is say 1, 2 and 3. This is 1, 2, 3. Okay, okay. Then x is equals to 3, the line is parallel to y-axis, and but it is greater than 3. So this segment is of greater than equal to 3. Here I am using white color. This is greater than equal to 3 away from the origin. This is x is greater than 3. एक का ग्राफ ड्रॉ कर दिया. Then from second, x plus y is equals to 5. If x is equals to 0, the value is 5, y is 5, and when y is 0, then x is equals to 5. So this is fourth and this is 5, then again 4 and 5. So if x is 0 and y is 5, so this point is of 0, 5. Okay, and when y is 0, x is 5, so this point is 5, comma 0, and draw a line of this. Okay, draw a line of this, now color it. So this is x plus y is greater than 5, so it is away from the line. Okay, so now this portion is, this is the case, this is the graph. Okay, these lines are coming. Then from third, x plus 2y is equals to 6. If x is equals to 0, y is equals to 3, and if y is equals to 0, then x is equals to 6. So x is 0, y is 3, so this point is 0, 3, and y is 0, x is 6. So suppose this point is 6, comma 0. So draw a line. This is the line, and again this is greater than greater than, this is greater than, so it should be, this is greater than, okay, this is greater than, then the next is y is equals to 4. So we are getting this region is common. Which is the common region we are getting? See, the region is, this is the common area. Okay, this is the common area. This area we are getting common. So the corner point, what will be the corner point? So the corner point is, so the corner point is, one is 6, 0. So the corner points are, corner points A 6, 0 and B 4, 1 and C 3, 4.
Okay, so the value of z is equals to, what is z? Minus x plus 2y, minus x plus 2y. So this is equals to minus 6 plus 6 0, minus 6 plus 0, that is minus 6, and here point z is equals to, at this point, a minus x, minus 4 plus 1, that is minus 3, and at this point z is equals to minus 3 plus 8, minus 3 plus 4 to the 8, that is equals to 5. So now draw the graph of z, because this is the maximum value, so the graph of z is greater than minus x, means the graph of this is minus x plus 2y is greater than 5. Maximize. So draw the graph of this. Okay, if the graph of, means x is equals to 0, y is 2.5. So y is 2.5. So 2.5. So this is 2.5. Okay, and when y is 0, then x is 5. So this is the 0, 5. This point is coming common. So this is the graph of which passing through the common point. So which passing through the graph of z is passing through common point 5 0. So it means no maximum value. Okay, so this is the case. Got it? Okay, if in the open region, in the border region, okay, whatever the maximum value is coming, put it here. So it is maximized. So minus x plus 2y is greater than 5, and draw the graph of z. And if the graph of z passing through any common point, then there will be no maximum or no minimum value. Okay, and if suppose this graph of z is passing through some other point, so whatever the maximum value in the table is coming, that will be the maximum value. Okay, got it? So this is all about your linear programming. Thank you very much. And if you are having any sort of doubt, please write your doubt in my comment section. And those, again, I am requesting to you, those who still not joined my channel, please join my channel, so that you will get the notification on time. Thank you very much.